गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। बोलने का आदत मेरे को छोड़ना पड़ेगा। एनीवेज, सो अपडेट कि क्या कर रहा हूँ मैं। मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने 2 लाइव अकाउंट्स थे मेरे पास, जिसको मैंने कल एक को ब्लॉक कर दिया। दैट आपको एक बात बताता हूँ, सच बात बताता हूँ। तो बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल सिंस येस्टरडे। तो कल ना ट्रेडिंग करने के पहले से ही मेरे को 1-2 घंटे पहले से ही दिमाग में ये चल रहा था, यार आज ट्रेड नहीं करते हैं। बट देन माई माइंड वॉज ऑल्सो टेलिंग मी एक्सक्यूजेस देने से नहीं चलेंगे, घर पे ही बैठे हो, आपका घर पे ही है ऑफिस आपका खुद का अपना, आपको टेंशन नहीं है किसी चीज़ का, आपको कहीं जाना नहीं है, क्यों नहीं करोगे, ऐसे टाइम वेस्ट करके क्या होगा। तो मैंने अपने आप को वैसे डिसाइड किया कि नहीं, आई शुड ट्रेड। सो आई स्टार्ट ऑन द ट्रेड। आई टुक लॉसेज दैट आई शुड नॉट हैव टेकन। मुझसे लॉस बर्दाश्त अभी भी नहीं हो रहा, ये मुझे समझ में आया। बट नेवरदलेस आज फिर से शुरू करते हैं। फीलिंग बेटर नाउ, सो लेट्स सी। तो मैं क्या ना स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता हूँ, फटाफट एक जस्ट देना चाहता हूँ आपको। दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं पहले। सो ऑन द डेली टाइम फ्रेम ओवरऑल स्ट्रक्चर बियरिश ही है। इफ़ यू सी, we had a spike of 200 plus points during London session because of a news that China wants to talk to US, is open to talk to the US about tariffs and all that. So that happened. So yeah, that's pretty much it. Previous day low तो यहाँ पे था अपना, और प्रीवियस डे हाई यहाँ पे था अपना। डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस अगेन। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव नहीं है। अब आज न्यूज़ के कारण अगर कुछ पॉजिटिव आती है तो बात अलग है, ठीक है। पहला बात तो ये, और दूसरी देख लेता हूँ, बस चल रहा है ना सब कुछ। यस चल रहा है, ओके। तो ओवरऑल अगर आप मैं ट्रेंड में देखें तो मुझे ये ट्रेंड लाइन बहुत ही वैलिड लग रही थी, बट अभी के लिए तो लग नहीं रहा है कि ये ट्रेंड लाइन बहुत कुछ काम की है। आई शुड कीप इट। आई एम जस्ट वांटिंग कि इसको ना थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं कि ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए दिखता, ठीक है, क्योंकि इसका वेटेज उतना नहीं रहा मेरे लिए अभी। ओके, आई डोंट वांट दिस इधर, डोंट वांट दिस। चार्ट थोड़ा क्लीन करते हैं यार, है ना। कुछ तो गायब हो गया यहाँ से। अच्छा ओके, ये गायब भी हो जाता है। Okay. Oh, okay. Oh, all right. Did not know that. Anyways, तो ठीक है, ये पहला, this is what I see here and I do not have anything in particular on the daily chart. If I'll check the 4 hour में भी कुछ खास तो नहीं दिख रहा। 4 hour में अभी भी ट्रेजेक्ट्री हमारी डाउनवर्ड्स ही है, राइट। Retail sales came in better and all that, but nothing major. I'll just go to that and yes, so the retail sales came at 1.4%, forecast was 1.3, और उसके बाद मार्केट गिरा ही है, मार्केट उठा नहीं है, ठीक है। तो एक ये बात हो गई। दूसरा हमारा जो लो है, आई थिंक लो ये बना होगा ना यार। तो दिस मस्ट बी आर लो, नॉट दैट। ओह दैट्स 15 था, 15 का लो यही है, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज द लो, ठीक है। तो 4 आवर पे भी सीम्स बियरिश, अभी भी इस रेंज के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं। दिस इज़ मोर ऑफ अ डबल बॉटम स्ट्रक्चर। अगर आप देखो तो, अगर ऐसा देखो आप इसे, तो दिस लुक्स लाइक मोर ऑफ अ डबल बॉटम विच माइट वांट टू गो अप। तो अभी क्या है, एक ट्रेंड लाइन भी आप देखोगे नीचे से, अगर हम ये करना चाहें तो दिस कैन बी अ ट्रेंड लाइन, बट बहुत कॉन्क्रीट नहीं है, राइट। ये कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं बनाना। आई जस्ट हैव टू जबरदस्ती मेक दिस। तो इफ़ आई मेक दिस, दिस इज समथिंग दैट हैपन, राइट। ओपेसिटी इसकी बढ़ाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। सो मोर ऑफ अ ट्रेंड लाइन लाइक दिस, बट आई डोंट रियली माइंड टू डिलीट दिस। मेरे को बहुत कंक्रीट नहीं लगता है। इसको 2 बार टैप हो चुका है, कुछ मेजर मूव भी नहीं आया इसके पास से। पहले आता भी तो, लेकिन अभी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा ही देता हूँ। ज़बरदस्ती रक्कस क्रिएट नहीं करना मुझे अपने सेटअप पे। तो ये हट गया, हो गया, ठीक है। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़े से और। सो विल गो टू द 1 hour टाइम फ्रेम एंड दिस इज 1 hour कैंडल का पावर ऑफ 3 का कैंडल मैंने यहाँ पे रखा है।
resistances are here. Then we have this is the spike that I'm talking about, जो उस टाइम आया था और फिर यहाँ से नीचे वापस हम लोग आ चुके हैं. So this is a fair value gap that was created and now we have already tapped into that and we are stagnant somewhere like अभी 2 मिनट में एक और छोटा सा मूव आके ये और बॉडी तक जा सकता है. ठीक है, नथिंग मेजर. आप अगर इस चाहोगे कि इस मूव को भी देखो तो ये ऑलरेडी सब कुछ टैप करके नीचे जा चुका है. तो इट नॉट रेलिवेंट फॉर अस. ठीक है, 15 मिनट पे चलते हैं. 15 मिनट पे यार तुम्हें ना ये दिखाना चाहिए कि आप कहाँ से कहाँ तक ये इसमें सिस्टम तो होना तो चाहिए यार. स्टाइल, विजिबिलिटी, oh no, I want you to be just black there. Inputs and status line. ठीक है, this is something that I am supposed to see. Wick also this, red, yellow and all that. Okay, all the stupid stuff is done. So overall ये कैंडल 1 आवर का कैंडल का पावर ऑफ 3 दिखाना चाहता है हमें. दैट इज 49.25 USD. ऑलराइट, अगेन नथिंग मेजर हियर. दिस इज अ विक्ड आउट स्टेप जहाँ से एक मूव अपवर्ड मूव आया था. दिस कैन बी कॉल्ड एज अ ब्रेकर ब्लॉक ऑफ दिस डबल बॉटम. सच अ क्लीन डबल बॉटम यू सी. और यहाँ पे ना ये जिस तरीके से ओपन होते हुए गिर रहा था तो आई थॉट कि दिस इज गोइंग टू गो डाउन, बट नो, इट डिड नॉट go down. Okay, so this is now, right now it's going down. I am going to remove the moving averages on my other screen. It actually does not help me. It actually creates more confusion for me. So that is there, and let's go to the 1 minute chart on this here. Actually, let's go to the 2 minute chart. Gold is doing its thing, so I'll just keep gold on a side chart. All right, I'm going to move this Bollinger Bands lower and lower and lower and lower. That is what Bollinger is showing on the 2 minute. So nothing major as of yet. ठीक है, ये drop ही दिख रहा है मुझे, गिरता हुआ ही दिख रहा है अभी. All right, so that is 658 and 658 पे usually छोटा सा drop हम देखते हैं जो कि हमें दिख रहा है अभी भी, and we might go here. This is our day's low. I'm just going to mark the day's low here. All right, good day low. डे हाई यहाँ पर है, वो क्लियरली दिख रहा है. ये प्रीवियस डे का लोगो इसने ब्रीच किया, वहाँ से लिक्विडिटी लिया और ये वापस नीचे आ गया. एनीवेज ठीक है. 1 minute to market open, just going on the 5 minute chart. I do not have a clear bias right now, so when I don't have a clear bias because of news and everything, I'll just wait out for if there's any setup that I see. Please excuse me. According to Xinhua, she seeks upgrade protocol of China ASEAN free trade area. Ten seconds. Market on open imbalance. S&P 500 sell side 117 million. Nasdaq 100 sell side 45 million. Dow 30 sell side 19.8 million. And Mag 7 sell side 29 million. All right, market opened and we are going on a positive note. So we just are doing this right now, right? I should open. No, I don't want to open that here. I don't want to connect my TraderWeight account on this one yet. Let's let it be. Philadelphia Semiconductor Index falling 4.6% at the open. What? Okay. Nvidia shares sink 7% on China chip curves, and AMD tumbles 8.1%. If at all it wants to push up, might take days low first and then it might push up. So that is what I feel might happen.
आई ऑल्सो चेक कि क्या कर रहा है एनवीडिया, कुछ तो झोल कर रहा है। ओ माय गॉड, एनवीडिया इज -6%, एवरीथिंग इज डाउन, व्हाई इज इट डाउन? Chip shares from Nvidia disclose export restrictions. So export restrictions on certain chip manufactured by Nvidia have weighted on the chip makers and the share of Broadcom will become a proxy of chip makers given its booming valuation and all that. So Nvidia has bad news. Now if Nvidia has bad news, so everything has bad news. Nvidia opened much lower trying to push up. It has come back into that channel. If you see, that is the channel that we drew. And ding dong and came here. Apple also trying to push up. Everything is down though, so that is all I see right now. So we just had a good positive spike. I'll show you what I'm talking about. So that is a good positive spike, taking us upwards. I'm going on the 5-minute again. Let's see क्या करना चाहते हैं आप. What is XPX doing? Also opened lower, trying to push up now. So overall इसके टेरिटरी में तो ये नेगेटिव ही दिखता है मुझे. तो ये जो भी इसका क्लाइंब है, I don't really feel comfortable with this climb. I think we still have more potential to drop. How much has it dropped from the top? So from the top it has dropped 21%. So that is a bearish territory, right? So all of that jump is something that does not digest well right now with the market conditions and trade war and everything. 3 minutes into the market, we are seeing some spikes upwards. देखते हैं क्या सर आपको यहाँ तक जाके नीचे गिरना है कि क्या करना चाहते हो आप, राइट? थोड़ा सा कंसोलिडेशन है यहाँ पर ये वाले जोन पे. So let's see if it wants to tap this and go below or whatever it wants to do. Let's see. According to preliminary plan, Angola to ship 1.07 million barrels per day. Bollinger Bands Nasdaq में तो बहुत काम, मतलब मुझे नहीं लगता है काम करता है. This is something that actually works in Nasdaq, so I'll just keep this. People use a lot. Nasdaq में से बहुत लोग यूज़ करते हैं. इसे रखते हैं अपन. क्या होता है इसे रखने से नहीं रखने से देखते हैं वो तो, बट लेट्स सी. I don't have my webcam on or my camera on is because मतलब चेहरा दिखाने लायक नहीं है फिलहाल के लिए, तो इतनी तबीयत थोड़ी सी नरम. Away until we get the Bank of Canada rate decision. Forecast is for no change prior to 2.75%. We'll also get the Bank of Canada monetary policy report and the rate statement. Reminder later on at 10:30 a.m. Eastern time we get the press conference with Bank of Canada's Governor Mackey. Seems like we want to push higher. That is a good volume candle. Obviously market open candle है तो क्या ही good और क्या ही bad इसमें. देखते हैं क्या कर रहे हैं.
something that I would like to do is this. Keep watch on Nvidia is what I would like to do. अरे आप रहो ना सर, 5 मिनट पे रहो, आपको देखना है इससे। ऐसे तो कुछ नहीं दिखेगा, ऐसे तो कम से कम समझ में आ रहा है ये क्या करना चाहता है ओवरऑल, क्योंकि जैसे तो नास्डैक रेप्लिका है एनवीडिया के चार्ट्स का। एनवीडिया जो करेंगे नास्डैक वही करेंगे। एप्पल का मार्केट कैप एनवीडिया से भी ऊपर है, बट ये एनवीडिया को ज़्यादा फॉलो करता है। See, poised to be chipped at the open and it has pushed up. Like after new US का फ्यूचर स्लाइड हुआ वो तो चलो ठीक है। ये चाइना का न्यूज़ इसको पॉप किया था, क्या पॉप दिया था भाई, डबल बॉटम बना के 350 पॉइंट ऊपर। ओके You can see Alibaba down 3.1% and Baidu down about 1.4%. Again, US listed shares of Chinese firms fall, tracking a decline in mainland peers over trade war jitters. Just to keep in mind, Apple is 1.5% in the downward side, Nvidia 5, तो Apple minus 1.4% है, ठीक है, और Tesla भी minus 1.6%. Everything is in red, so just keep that in mind. Okay, we're pushing upside. Gold is dropping right now. Might want to take the liquidity before doing its thing. We have tapped this zone and I see some negative movement here. That is somewhere I would have taken a trade and this would have given me my targets. क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस स्पाइक दैट आई सी हियर एंड दिस गैप although not very healthy, but this is where I thought कि 20-25 पॉइंट तो ये मूव कर ही सकता है, उसने कर दिया। So it went till 680, the usual 680 zone, and came to 650. That's 30 points. हमारे लिए 30 points अभी के लिए तो काफ़ी था। मैं देखना चाहता हूँ ये कहाँ से अच्छा सा ड्रॉप देगा। I really wanted to drop below all this. Right, so let's see. I'm seeing some drops here. Not very sure of this drop. Manipulative भी हो सकता है ये, तो यहाँ पे सेल करना मुश्किल है। नीचे भी जाना है, ऊपर भी जाना है।
इतने शांति से तो ये बैठता ही नहीं है जितना भी बैठा हुआ है। अभी तक तो उठा पटक कर चुका होता है। 4 minutes more into a complete 15-minute candle to close. 3 minutes 20 seconds more. How's the Indian market today? Fairly positive. Okay. ऊपर जाने की तैयारी में है ये फिलहाल, तो अभी तो शॉर्ट करना सही नहीं रहेगा। स्ट्रेट 90 डिग्री ड्रॉप देता है ना, वैसा टाइप का मूवमेंट है, या तो ऊपर ही जाएगा वेव्स में या फिर ड्रॉप दे देगा। तो अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल है कुछ भी ट्रेड करना। आई डोंट सी अ गुड पॉइंट टू ट्रेड, आई डोंट सी एनीथिंग राइट नाउ। आई विल जस्ट होल्ड ऑन टू दिस। If anything, then buying is a good option right now for a quick scalp. That is all I can say. 30-40 points, that is all you can do right now. Just a moment. One minute to go now. I see that we want to drop a bit. Looks like it. I'm still going to wait for some more time. Seconds. No change, no change. Rate remains unchanged at 2.75% as expected. Bank of Canada says that we will support economic growth while ensuring inflation remains well controlled, and it expects tariffs and supply chain disruptions to push up some prices. Major shifts in US trade policy have increased uncertainty and cut prospects for growth and raised inflation expectations. High inflation in the last couple of months reflects some rebounding goods price inflation and end to temporary suspension of sales tax. Starting in April, inflation will be pulled down for 1 year by removal of consumer carbon tax, and lower oil prices will also dampen inflation. Forecasts for economic growth and inflation are of little use as a guide to anything. Data are increasingly pointing to a considerable slowing in business investment and household spending. Macklem says total CPI inflation expected to be about 1.5% in April. Elimination of consumer carbon tax will cut CPI inflation by 0.7 percentage points for a year. Macklem says Q1 annualized growth is forecast to be about 1.8% and Q2 growth will be much weaker. If we find ourselves in a protracted trade war, we will see a
opposing forces on inflation. So just keeping an eye on the Canadian dollar, seeing a little bit of seeing some strength off the back strength off the back of the rate decision. Bank of Canada's monetary policy report does not provide economic forecasts and cites uncertainty generated by US tariffs. Also, Bank of Canada releases two scenarios on what could happen. First scenario envisages most tariffs being negotiated away. Second scenario sees long-lasting global trade war. Also, in the first BOC scenario, Canadian and global growth weaken temporarily, and Canadian inflation falls to 1.5% for a year, then returns to 2% target. Second Bank of Canada scenario sees sharp global slowdown and increase in inflation. Canada enters significant recession and inflation rises above 3% in mid-2026 before returning to 2%. And in both scenarios, nominal neutral interest rate is estimated to be in midpoint of a 2.25% to 3.25% range. Many other scenarios are possible. So in regards to the annualized GDP Q1 estimate, seen at 1.8% compared to the prior estimate of 2% seen in January. And Bank of Canada estimates that Q1 2025 output gap was between -1% and 0%. सो द बॉक्स दैट विच इज़ ड्रू, जो हमने अभी अभी ड्रॉ किया था, इसने एग्जैक्टली उसे टैप किया है और वहाँ से 100 पॉइंट दे चुका है अभी तक. तो आई एम रियली लाइकिंग दिस राइट नाउ टू सेल दिस, टू बी ऑनेस्ट. Canadian swaps markets see 67% chance the Bank of Canada remains on hold in June.
wasting some time here. I still feel that we are going to see a good drop about now. जैसे मैंने कल बोला तो, और ये इंस्टेंट ड्रॉप दे दिया था, मेरे को लग तो रहा है ये ड्रॉप दे देगा. So that is a good drop that I just thought that it would give. Somehow the delay in the execution has costed me some good points here. मैंने क्लिक किया, उसके बाद फिर टैप हुआ और उसके बाद मुझे दिखा रहा है कि एग्जीक्यूशन हुआ है. कोई बात नहीं. आई थिंक वी आर इन अ गुड ट्रेड एंड आई डोंट फील कि एटलीस्ट जहाँ तक हम सोच रहे हैं वहाँ तक तो हमें मिल जाना चाहिए पॉइंट्स. देखते हैं. आई एम गोइंग टू ड्रैग माई स्टॉप लॉस हियर. वे टू मच ऑफ स्टॉप लॉस. चलो सर, अब तो आप बदमाशी मत करो. आपने जो चीज़ टैप कर दिया ना, आप वहाँ से नौटंकी ज़रूर करना चाहोगे, मुझे पता है. मत कर यार. मत कर यार प्लीज. स्ट्रेट अवे गिर जाए यार. अभी मैंने तुम्हें देखा है बहुत ऐसे गिरते हुए, तो गिर जा अभी. कॉन्फिडेंट है मुझे, मेरे को कि तू जाएगा नीचे. या आई जस्ट नीड 100 more, like 10 more points from my cells. That is all. 10 no 12 13 points from my cell. That is all I'm wanting. Although हम और अच्छा ड्रॉप दे सकते हैं यहाँ से, बट पहले one thing at a time, right? One thing at a time. Just go. अभी भी नहीं हुआ. क्या बदमाशी है यार. गिरेगा तो अच्छा गिरेगा ये. Confident about that. आई थिंक ये गिरेगा तो बहुत ही अच्छा गिरने वाला है. गिरो भाई. Do your thing, come on, do your thing. Do your thing the way you do it. Yes, let's go. Swiss government says 2025. Go for days low at least, come on. Then 1.4%. Go for days low. Also seeing Brent crude futures rising more than $1 a barrel on potential for US-China discussions and Iraq output cut plan. क्या बदतमीजी कर रहा है यार. Also the same goes for US crude futures as well. आई थिंक दिस इज़ वॉट मैनिपुलेशन. आप जो बोलते हो ना कि पहले ऊपर गए फिर एक्चुअल मूव दिया, तो मैनिपुलेशन अगर PO3 का ये है तो ये मैनिपुलेट ऑलरेडी कर चुका है. अब आराम से डेज लो दे सकता है विदाउट एनी डाउट. Going there, about to go there. Let's go. लिक्विडिटी की हद हो गई है. जाओ सा नीचे जाओ सा. Swiss government citing US tariffs as a reason for weaker growth. Oh, gold just pushed up. Gold said fuck you and pushed up. I'm going to buy gold here, keeping a stop loss here, and I am confident that gold is going to push higher today. The monetary policy report and the rate statement on the feed for you to read through. While Nasdaq is teasing me, gold might not tease me today.
Definitely, Nasdaq wants to tease me the most today. कोई बात नहीं, कर लो आप सर, इतना परेशानी की कोई बात नहीं है, कर लो, परेशान थोड़ा सा करते हैं तो क्या हो जाएगा. Yep, manipulating, ding dong. कोई नहीं, करने दो. लंदन हाइस तो लिया नहीं है ये, आप क्यों वैसे भी मैनिपुलेट करना होता तो कर चुका होता अभी तक. हाँ, डूइंग इट्स थिंग, और क्या बोलूँ मैं. Starting with the US&A HP Housing Market Index forecast 38 higher, 39, and business inventories forecast 0.2% higher, 0.3%. So we'll lead with the business inventories. Yep, I would like to close this actually. I'll let some minutes go now. Well, you sir, परेशान कर लिया आपने. अब नीचे जाना है तो चले जाओ, अब बदमाशी मत करो. जितना करना था कर लिया आपने. Gold is actually going to tap my stop loss. That's crazy, yeah. So I'm just giving gold a more breather here. It might go upwards now. Seconds. Need to stabilize. Need my... Yes, that is good. I would like to take that, and I would like 0.2%, to 0.2% as expected. NAHB Housing Market Index 40, ठीक है, 40, ये highest चलेगा forecast आपको. 38. So we just tapped days low, and I would like to see how it reacts from here, and then I would like to get into any trade if it makes sense to us. So look at gold. Look at gold. What it is trying to do. It just pushed up again. Crazy. We have taken a days low here. हाँ, डेज लो, मतलब अभी भी थोड़ा सा तो उम्मीद है इसमें, अभी भी जान बचा हुआ, बट अभी अगर पुश करेगा तो करेगा. वी हैव अ न्यू कैंडल नाउ.
Mexico's President Sheinbaum So this is a that they've 1 hour bounce of a double bottom also. You look at that and it is trying to bounce from that. diplomatic memo to the US about security It's a collaboration at the border. very clean slate here. So it was expected कि कुछ तो आएगा ही. Gold has taken the London liquidity and I'm seeing some negative movement here. Look at that. And I'll show you London liquidity क्या बोल रहा हूँ मैं. So that's London high. It went higher and then it is closing downwards now. So if at all it wants to go down, this is a good time, really good time to go down. I am going to focus on my NQ here. I don't need you to be working here. Okay, so we have pumped around 60 points from the lows. गोल्ड पहले इतना आराम से ट्रेड कर पाता था मैं. Like I actually was able to trade nicely. I could trade well, but these days gold is so stupid to trade. एक कैंडल 100 पिप्स का बन रहा है, एक कैंडल में 3220 323230 ऐसा बन रहा है. So makes no sense. मतलब मेरा स्टॉप लॉस और ये सब हिल गया उस पर. तो मैं अभी गोल्ड कम ट्रेड करना चाहता हूँ. लुकिंग एट गोल्ड यार कि क्या आप नेगेटिव जाना चाहते हो. US issued fresh Good. Iran-related sanctions according to the Treasury All right, website. 80 points from the lows. This is somewhere which I think it might reverse from the 50% kind of stuff. The Iranian Foreign Ministry Well, not yet. as venue of the Iran Nothing major here. discussions to a goalpost in soccer match, saying This is what I'm looking at and this is what I'll just look at. also Gold is doing melodrama right now. sanctions Although I still feel that we might have the US issuing fresh Iran-related a drop because we also have tapped 3320 19.825 like 3320 and then we also have taken the London liquidity, so that is a good time to sell. इतना अच्छा इसका मोमेंटम है ना अपवर्ड्स में कि मैं डर रहा हूँ उसे सेल करने में. Yeah, that is what honestly I can say. $50 पिप्स के लिए सेल अभी भी बनता है वैसे गोल्ड में. आप बेचना चाहो तो 50 पिप्स आराम से दे सकता है गोल्ड अभी भी. What are you doing, sir? Okay, more downwards trajectory for Apple. Nvidia is noodles बना रहे हैं यहाँ पे noodles twing 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 Iran's wave. ally on X says changing the goalpost can jeopardize any beginning. Tesla had a good spike right now. Iran US nuclear That might have added on to that push towards here. excuse me, Saturday. Yep.
Excuse me. Okay. I took a short scalp in gold. That made me $290. चलेगा मेरे को. Gold has also tapped 50%. So that is what I'm saying here. If you just go with the fib level here, this push up, it just tapped here. 15 मिनट के लेवल्स पे तो ये स्टूपिड है बनाना. 15 मिनट का ये हायर हाई का फॉर्मेशन. अब ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये है ट्रेंड लाइन भाई साहब. दिस इज द ट्रेंड लाइन. नास्डैक को ये सब समझ में नहीं आता. नास्डैक ने ये सब पढ़ा ही नहीं है, स्कूल में उसे पढ़ाया नहीं गया था. Right, look at this boy, 100 points now. What you wanna do? What you wanna do? What you wanna do? Okay. 200 पॉइंट आराम से दे सकता है ये. इफ इट गोज नेगेटिव फ्रॉम हियर लाइक इट ब्रेक्स दिस लो, इट कैन गिव यू 200 पॉइंट्स आराम से. मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट एकदम छोटा सा सपोर्ट भी अपने देखे ना तो वो दैट इज 320s. मैं ऐसे सेल करने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ अभी. इसे नहीं, इसे मैं हटाता हूँ यहाँ से. अभी मेरा गोल्ड का हो गया. इसे सेल करने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ. अरे ये क्या है भाई, पागल हो गए क्या? मैं डाल दूंगा कॉन्ट्रैक्ट, फिर बोलोगे सर आपने तो गलती कर दी, अब आपको तो सर बाहर निकाला जाता है. 50 कहाँ से आ जाता है इसमें अपने आप? आई एम गोइंग टू सेल दिस यार. कीपिंग माई SL हियर, गुड SL, and I believe we are going till this place, right? So that's okay. That is where I will keep my TP, and I'm going to let it run. So ideally this is what I am aiming for. है ना? कहाँ गए भाई तुम? मैं एक बार 1 hour लगाता हूँ इस पे. This is at least where I would want it to go, but right now I'll just sit it out. मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है. देखें क्या कर रहे हैं. Because this is a rejection here, it already went up. So वापस से ना accumulation, manipulation and distribution should go up and then down.
So it went up, time to go down. Going to remove this. Let's go, sir. Let's go. Once you reach here, I'm going to break even my trade because I know how naughty you are. So I'll keep that in mind and break even. So did gold actually? Okay, gold gave a good candle, but still pushing lower. देखते हैं क्या ये 3304 से बाउंस देता है, 33045 से, और क्या आज आप हमें ये दिखाओगे, ये मैं देखना चाहता हूँ. Yeah, if this reaches here, I am going to break even my trade. Here. I see Nvidia dropping. Nvidia has failed this. It's trying to push lower. $100 is where Nvidia might go to. Once the seller starts selling. I also want to trade US30. I have seen people making good out of this. देखते हैं. Going for days low in the open area. Okay. Okay. Are you doing what I think you're doing? Yeah, you might actually. You might, sir. You might do it. क्योंकि जब ये डबल बॉटम, ऐसा सा जो डबल बॉटम है, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ. अरे भाई सॉरी, ये जो डबल बॉटम है, जब ये पूरा फिल करने के पहले अगर ये ऊपर चला जाता है तो फिर ये ऊपर की तरफ अच्छा दे सकता भी है. तो दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी. आई डोंट सी that happening right now, but let's see. Forecast is for a build of 0.945 million. Prior was a build of 2.553 million. Gasoline inventories forecast is for a draw of 1.707 million. Prior was a draw of 1.6 million.
Still in inventories, forecast is for a draw of 1.14 million. Prior was a draw of 3.544 million. Cushing inventories. What the S&P doing? 0.68. S&P is also 1.37 minus. 6.58 minus Nvidia, minus 2.72 Apple, Tesla is minus 2%, and everything else is in red. Trump has really spiraled down a lot of things. The actual came out at a draw of 3.2 million. While we are at it, let's see what you're doing. 1.844 million. So you actually went down to 3308 and then went down to 314 also. 0.6. Yes, naughty. And gasoline stock change API Oh my god, you bad boy. build of 0.207 million. Huh. यार बाइंग आनी होती तो लगता कि बाइंग आने वाली है, लग नहीं रहा देख के। देखते हैं नेकलाइन ब्रेक करके क्या ये यहाँ से सेल ऑफ दे देता है या फिर यहाँ से सेल ऑफ दे देता है। So this is going to be an important area for me to look out, and this is what I don't feel comfortable anymore. इसके बॉडी से बाहर है, ये इसके बॉडी से बाहर है, तो ये अच्छा जोन है जहाँ से ये एक रिवर्सल दे सकता है हमें, राइट। तो दिस इज़ वेयर आई वुड ट्राई टू लुक फॉर सेल्स इफ़ वी हिट स्टॉप लॉस हियर, ठीक है। इसको एक बार हम मार्क भी कर लेते हैं क्योंकि 5 मिनट का जोन भी है, 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप भी है, तो इसे 5 मिनट मार्क भी कर लेते हैं। चलते हैं 2 मिनट पे वापस से, 1 मिनट पे चलते हैं वापस से। चलो सर अब आप दिखाओ, बदमाशी कर रहे हो कहाँ तक आप। तो ये कैंडल यहाँ स्टार्ट हुआ था क्या, कि यहाँ स्टार्ट हुआ था यार, यस क्रेजी। This is the candle low, this is the candle high. So this, because this is a candle low, so we just distributed. Are we accumulating or then we are manipulating? Are we manipulating, distributing? What the fuck we are doing? I don't know. What I see right now is we have reached the neckline. Neckline से आप कहाँ जाना चाहते हो अब देखते हैं इसे। इस जोन पे वीवैप भी है, मतलब यहाँ से तो आपको एक सेल पोजीशन देना तो चाहिए, बनता है ना, बनता है। We also have put out the press conference for Bank of Canada Governor Macron speaking, whether that's due to start at 10:30 a.m. दिख गया क्या, यहाँ बैठे हम लोग, हमें हाई बोलना होगा यहाँ पे। Let's see. We might be doing it. We might be doing it. I like TraderWeights का जो अकाउंट जो प्लेटफॉर्म है ना, तो आप उसके वेब पेज पे जब ट्रेड करोगे ना TraderWeights के वेब पेज पे, तो उसमें जो कैंडल्स बनती है ना, दोज आर स्मूदर कैंडल्स। आई लाइक स्मूदर कैंडल्स। दिस इज अ झटका कैंडल, ऐसे 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 मूव करता है। ये क्या है यार, दिस इज व्हाट यू शुड, दिस इज हाउ यू शुड मूव। निंजा ट्रेडर का भी कैंडल्स बहुत स्मूथली मूव करता है, ऐसे 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 आराम से, ये ऐसे 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 थोड़ी करना होता है, ऐसे मूव करो। So that hit this at this at our stop loss, that is closed. Looking for we really have good candles on the 1 minute chart. 5 मिनट पे भी एक बड़ी सी कैंडल तो बनी है यार, मतलब पोटेंशियल बाइस की सिग्नल है ये। Being careful at around 18,500 region on the indices, and here that's 18,620, 630 region. Let's see.
You also get the bank tender press conference. The This video is that we this is the place you would want to sell, to be honest. Okay, I have reached that spot where I would like to sell, with the confirmation though. Okay. Okay. See, I told you right कि ये ऐसा डबल बॉटम जब बनता है तो मूवमेंट अच्छी आती है. इसने मूवमेंट यहाँ पे अच्छी दी है अभी तो, और अच्छी मूवमेंट देता ही जा रहा है. कोई बात नहीं. दैट वाज स्टॉप लॉस. दैट वाज स्टॉप लॉस. अब देखते हैं अब क्या करते हैं. क्या यहाँ से भी आपसे एक अच्छी सेलिंग आने वाली है? Right. Don't want to sell, right? Doesn't want to sell. Revisiting all the bigger time frames right now, just to check if on the bigger time frame this is also doing what it is. I think it is doing कि ये भी एक डबल बॉटम है, यहीं से पुश करना चाह रहा है, और क्या ये यहीं से पुश कर देगा is what I feel कि is that possible for us. So looking at that, so that is what we made before market opened. This is something I feel might happen. That is one scenario. And but given all the negativity in the market and everything, highly uncertain about that. 1 minute. So You're now clean with the crude oil. again, I'm looking at this chart which says I want to go higher and higher and higher. देखते हैं अब ये क्या करता है. Okay, we're seeing good buys on Nvidia. Continuous 5 straight, 1 2 3 4 5 green candles, and that is a good ass candle to go upwards on a trajectory. Still not very positive about this. Seconds. Zero spot 515 million. That's a build of 0.515 million. Build of 0.515 million compared to the expected build of 0.945 million. Gasoline inventories, a draw of 1.958 million, a draw of 1.958 million, compared to the expected draw of 1.707 million. Distillate inventories, a draw of 1.851 million, a draw of 1.851 million,
compared to the expected draw of 1.14 million. Crude Cushing inventories, a draw of 0.654 million, a draw of 0.654 million. Not seeing any reaction from WTI there off the back of the EIA crude oil inventories data. Press conference with McNamara has begun. World Bank President Banga says global uncertainty is contributing to a more cautious business and economic environment. Banga also adds that developing economies are playing far more central role in global trade than 2 decades ago.
inflation in developing nations can offset risks of reciprocal tariffs. World Bank's banker adding that there is untapped potential in deeper regional integration.
Okay, so that has given me 2 stop losses for the day, and that is enough for me. Going to close today.